हो र के भनेको साउन्ड पनि आइरहेको छैन मस्त अनि के छ अनि अरू साउन्डै छैन त सानो न सानो आइरहेको अनि मैले त के सुन्दै थिएँ त हो अनि के कुरा सुन्दै थिएँ अनि कहिले हो त अनि तुझसे शादी करने के सिर्फ 3 दिन बाद ही ठुलो बाउ बन्ने वो बेचारी तुझसे दूर हो गई। तब से लेकर आज तक वो तेरी राह देख रही है। रितु अनि अब छोराको हो कि छोरीको बाउ बन्दैछ साह्रै त अनि कान्छीले भनेको तुमसे अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। कहिले हो कुन महिना हो तुम कौन हो मैं नहीं जानता। तुम मुझे नहीं पहचानते। अब कहो कि इस टैटू को भी नहीं पहचानते जिस पर मेरा नाम लिखा है। अब भी तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है? नहीं, क्योंकि मुझे जन्म देने वाले असली माँ बाप ये हैं और ये है मेरी असली माशूका। हे ऊपर वाले, ये तू मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है? देखो तो, बच्चा पैदा करके रोड पर छोड़कर हम जैसों को परेशान कर रही है। सुने लड़के, तुम्हारे माँ बाप ये हैं। बेटा, इतनी बेइज्जती होने के बाद तुम यहाँ रहना चाहते हो? चलो हमारे साथ। अनि कान्छी के गर्दै हो त? सिर्फ तुम्हें छू कर बता सकता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम मेंटल हो क्या कि याददाश्त खो गई है? जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़कर किसी को भी अपना माँ बाप बोल रहे हो? यो साउन्ड आउँदैन। तुम्हारे माँ बाप कौन है ये पता करने का अब एक ही रास्ता है, DNA टेस्ट। अगर उस टेस्ट में ये साबित हो गया कि ये ही तुम्हारे माँ बाप हैं, तो मैं भी मान लूंगी कि मैं ही तुम्हारी लवर हूँ और तुमसे शादी भी करूंगी। क्या तुम तैयार हो? ये क्या पंगा है यार? अरे वाह, तुम्हारा आइडिया तो बहुत कमाल का है। अब हम ऐसा ही करेंगे। अब पहले हॉस्पिटल लेके जाओ और DNA टेस्ट करवाओ। फाइनली ये पेचीदा केस सॉल्व हो गया। आइप्याड हो यता। आइप्याड हो, आइप्याड। अनि आप में से भूपति मालती देवी कौन है? पुराना त यहाँ DNA टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़का आप ही का प्रूफ हुआ है। पुराना त यहाँ ख्याल आइरहेको छ। चल्नु त चल्छ। गोद से बेटा, नयाँ अब मोबाइल तो हम पर पाएपछि यकीन त किन करेगा? चलाउने? मैडम, इस सच्चाई को हजम करने के लिए उसे थोड़ा सा समय लगेगा। मेरे साथ आइए। दिन्छ कम्पनी। मिस्टर गोड्स, ये आपकी ब्रेन की मेमोरी सेल्स है। आपके सिर में गहरी चोट लगने की वजह से आपके ब्रेन की 70% मेमोरी सेल्स डैमेज हो चुकी हैं और फिलहाल सिर्फ 30% सेल्स ही काम कर रही हैं। इसीलिए आपको कुछ करीबी लोग ही याद रहेंगे और आप कब तक रिकवर करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, बेसिकली हम मुंबई के हैं, लेकिन इसे लगता है कि ये हैदराबाद का है, Yes. जबकि हम लोग इसे हमारी मेडिकल टर्म में देजावू कहा जाता है।
इसमें किसी नई जगह पर जाने पर भी लगता है कि जैसे हम पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं। ठीक उसी तरह किसी इंसान को देखने पर भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम उसे पहले से पहचानते हैं। ये नेचुरल ह्यूमन ब्रेन का स्वभाव है। आम इंसान में ये 2 to 3% होता है, जबकि आपके लड़के को 100% है। बाय द वे, आपका बेटा हैदराबाद कभी आया है? बिजनेस के काम से महीने में एक बार ये यहाँ आया करता था डॉक्टर। बस यही प्रॉब्लम है, इनके ब्रेन का मेन ट्रैक इरेज हो गया है और सब ट्रैक ही काम कर रहा है। इसीलिए हैदराबाद और आसपास की जगह और यहाँ के आदमी ही इनको याद है। मुझे लगता है इन मैडम जी और बाकी सबको इन्होंने कभी देखा होगा, इसी कारण से इस तरह बिहेव कर रहे हैं। मिस्टर गोडसे, इस समय आपका ब्रेन जो भी आपसे कहता है उसे नजरअंदाज कर आपको अपने माता पिता की बातों को अमल में लाना चाहिए। महालक्ष्मी, यो आईपैड किने अच्छा जानी हो तो यो इसको कवर लगा। तुमसे एक बार बात कर सकता हूँ? ये मेडिकल टेस्ट्स, डीएनए रिपोर्ट्स, ये सब नकारने वाले सच हो सकते हैं। आप लोग जो कह रहे हो वो भी सही हो सकता है। मैं आप लोगों की बातों पर
6 million years ago, Earth breathed in silence, wild, untouched, waiting. Life flourished in every shadow, from insects in the soil to giants of the plain. Volcanoes carved the land. Time moved like ash in the wind, shaping futures unseen. And here, in this, we got some oil. In the shadow of towering trees, life stirred. Curious, cautious, almost human. She moved like the apes, but stood like something more, something new. 2 feet on the ground opened a world of possibilities. She walked. In her eyes, a spark. Not of fire, but of future.
In a world without mercy, every meal was a gamble. She ate and listened. The hunter watched. Silent, ancient, perfect. She ran without thinking. Instinct, not courage, kept her alive. In this ancient world, survival wasn't victory. It was permission to try again tomorrow. In this ancient world, survival wasn't victory. It was permission to try again tomorrow. In this ancient world, survival wasn't victory. It was permission. They didn't speak, but they watched. And watching became learning. Step by step, they walked the line between beast and being. Towards something new. The world changed, not with fire, but with silence. The forest began to fade. Where trees once stood, open land now stretched for miles, and with it, new danger. Out of the shadows, into the sun. The savannah demanded more than muscle. To stay, they had to adapt. Eyes sharper, minds faster, or be forgotten. In her eyes, not fear, not triumph, just wonder. From root to rise, 6 million years passed in silent foot. We are not the end, but a chapter, carried by memory, moved by questions. It began with a single step, and now the next one is ours. The earth breathes quietly beneath the morning mist. In the high canopy of an ancient forest, life prepares to awaken. A young ape stirs, his golden eyes open to a world untouched by mankind. Drinks. He watches in silence, perched above a sea of leaves. The first light of day cuts far beyond the trees. A new presence stirs. He is not alone. From the shadows of the canopy, he watches. A family not his own, but perhaps it's Fluffyunk's. Instinct drives him forward, but fear holds tight. One misstep, and he falls, not just from a stair like stone. The old law of the forest is clear. Outsiders are not welcome. Hello there and welcome to Go Mining, the most efficient and transparent way to mine Bitcoin without the hassle of setting up a physical. He lingers at the edge, between fear and hope, past and future. To cross is to risk a single fig, not for hunger, but for hope. A fragile gift carried in trembling hands. He offers the fruit, not with words, but with gesture, in a language older than speech. She waits. He freezes. A moment stretched across instincts and consequence. She accepts. No celebration, no sound, but in her silence, he hears yes. Night approaches, and instinct whispers,
build, or be vulnerable. It won't win praise, but it will hold him. A cradle born of instinct and hope. And as he sleeps, his mind begins to wander. Dreams, the Hello? dawn returns, but not alone. के गर्दैछ? In the quiet light, something stirs. As the forest बत्ती मारेको छ breathes के? its first light, instinct awakens with it. And today, the prize is sweet. No words, just gestures, glances, and trust. अनि के साह्रै घाउ भएको छ अरे ठुलो? And danger. Sweetness comes at a price. But in this moment, danger is shared, and so is the reward. No fang, अनि यो लगाएन? just wood. अनि जुत्ताहरू लगाउँदैन? And from within the tree think you bank. Life, not instinct, not command. This is teaching. The passing of one mind अनि into another. पेनहरू त फुल पेनहरू हुन्छ होला त अनि Success, laughter, पेन त फुल हुन्छ होला त अनि learning, not by force, but by watching and trying. One, two, many hands. In the खै कस्तो बनाएको छ? forest, a culture begins to form. Every journey has a line, drawn between what is known and what could be. One step, not just forward, अनि जानु नि घर beyond, beyond safety, into कहिले? uncertainty. He looks back, then forward, and chooses the unknown, को not because it is safe, but because it is there. In that moment, something ancient यो राजकुमार चाहिँ के गर्दैछ? not strength. कालो He does not know what waits beyond the ridge. खै कहाँ छ त्यो कालो चाहिँ कहाँ छ खै हेरौँ? He walks. Millions of years will pass. खै कालीको लागि ओछ्यान मिलाउँदैछ है क्या हो? But one thing remains. The spark कालीको that लागि drives ओछ्यान us मिलाउँदैछ है क्या हो? कालेले beyond ourselves. The earth changed. The trees thinned. And something ancient began to rise on two legs. के फोनसोन पनि गर्दैन त हो अनि He doesn't think the way we do, राजकुमारीले but in his eyes, he carries no फोन tools, गर्दा पनि उठाउँदैन no त fire, ठुलो बडाहरू but he त्यस्तै हो carries हुन something त else. The shadow of everything to come. ए हिजोअस्ति गरेको थियो Not just survival, it is recognition. The first मसँग त्यो whisper पुरानो of आइडीमा memory, खै फोन चाहिँ morning. लाग्यो He एक does दुई दिन not गयो understand उठाएर death, but something in him wants to honor it. It is not a grave, अनि अस्ति त अनि छोराको बर्थडेहरू हालिरहेको थियो त अनि but it is something older than words. A gesture. Burial begins not with tools, अनि छोराको अनि बर्थडेहरू हालिरहेको थियो त अनि बर्थडे विस गरेको For the first time, they do not scatter, they gather. Together, they stay. They walk not in fear, अनि छोरा हो र अनि बर्थडे हाल्नु अनि what the earth offers. They learn by watching. They share without speaking. कालेको अनि छोरा हो र अनि बर्थडे विस गरिराखेको अनि They do not yet speak, but they plan. They do not yet rule, but they adapt. They cannot outrun छोराले change, चाहिँ
छोराले त त्यो काले आओस् न त्यसलाई म अलिक ठुलो भएर यसलाई खोजी खोजी कुर्छु भन्छ मायाकुरी कडा छ त छोरो राजकुमारलाई छोराले त मायाकुरी अस्ति हिजोअस्ति नै बोलेको थिएँ अहिले त उतै घरमा छ नि त फोन गरेर बोलेको थिएँ राजकुमारको छोरा के जीवनसँग बोलेको थिएँ अनि बाउ कहाँ छ भनेको त्यो माछालाई टिप्पु जहाँसुकै होस् त्यसलाई म खोजी खोजी पछि ठुलो भएर खोजी खोजी कुर्छु भन्दै थियो कहाँ गएको छ यसलाई म भेटौँमा मात्रै यसलाई म यस्तो कुर्छु भन्थेँ कि They do not yet know its power, but they know it is alive. The flame is not just warmth, it is memory. के थाहा नि कुद्नु पनि बेर लाउँदैन मायाकुरी यस्तो सानैमै छोडिएर अर्को लिएर जानेलाई कसले माया गरिराख्छ त त्यो बाउ हो र बाउ चाहिने बेला बाउले त साथ दिएन अब हजुरबाउसँग आमासँग हुर्केको अब यति बेला ठुलो भएर कमाइ खाने बेला मेरो कमाइ खान आइस् भनेर बोदिहाल्छ म त कुरा दिने हो झन् मायाकुरी बोध भनेर लगाइदिने हो And it becomes theirs. It belongs to no one. म त पुरा उकास दिने हो त छोरो चाहिँ This is the first thing they keep together. The flame no longer terrifies. कहिले शुक्रबार जाने अरे And food no longer needs. The raw becomes tender. अनि बुवाले भन्दै थियो मलाई त थाहा थिएन अघि बुवाले भन्दै थियो मलाई अनि फोन गरेको थिएँ फोन पनि उठाएर माघतिर कान्छोको पनि माघतिर माघ फागुनतिर हुन्छ अरे अब बाउ बन्दैछ अरे त अनि माघ फागुनतिर निक्लिने बेला अरे त अनि Now they carry it, not in hands alone, but in memory, in vision, in blood. मैले अघि फोन गरेको थिएँ म बाउलाई फोन गरेको गरेछ अरे खै किन के भयो भनेर फोन गरेको थिएँ त्यस्तो खासै केही पनि भनेन मलाई त मैले त सोधिनँ पनि एकछिन बोलेँ 10-15 मिनट अनि राख्दै मैले फोन गरेको नि त्यसले त फोन गरेको गरेँ न त्यसको बुढीले बाउलाई गरेको थियो अरे 5-6 चोटि मैले बाउसँग बोल्दै थिएँ नि त अनि फोन गरेको थियो अरे बुवाकोमा उठाएन अरे अनि हेरेको अरे कान्छोले गरिरहेको रहेछ अरे अनि अरू त ठिकै छ नि अम्बिका पनि आएको छ अरे त अनि इन्डियामै छ अरे त अम्बिका अरे इन्डियामा हो नि घर त होइन इन्डियामाथि छन् अरे उता के भन्छ आफन्त छ अरे नि त अस्ति नै हिँडेको अरे मैले अघि फोन गरेर म त इन्डिया आइपुगेँ त भन्ने कति 1 हप्ता जति हुन लाग्यो भन्दै It is a clumsy ambush, a cry of instinct, not skill.
होला नि अनि त्यहाँ त त्यो मुस्लिम कन्ट्री होला त्यहाँ कहाँ हुन्छ इन्डियाको ल चल ल खै त्यो कालेलाई देखाउँदा काले कता छ के गर्दैछ हेरौँ काले भैँसी जस्तै त्यो त्यो उयो तान्दैन हौ त्यो अगाडिको टुप्पो हामी चाहिँ कहिले घट्ने भइरहेछ आफ्नो चाहिँ ल चल
知道了啊，他们是要去踢馆，去找岳老爷子麻烦。岳老爷子是谁啊？他们找死了。听说这个日本大佬功不了得啊，真替岳老爷子担心。行了行了，大哥，请你喝茶啊。好，走走走走走。1、2、如果你在找这功能强又不贵的平板的话，那你一定要买出这一期的视频啦。因为呢，我面前的这一台呢，整个一套只要1500。哎，全握紧。4、5、谁是岳浩龙？叫他出来！是让他们干什么？谁？滚开！我找岳浩龙比武。为什么找比武？你没资格跟我身后比武，连最起码比武的规矩都没有。比武就得上擂台下战书。像你这样的一帮人来瞎比，比武的规矩一点规矩都没有，就得上擂台下战书。规矩，像你这样的一帮人来瞎比。